हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो हाउज योर लाइफ गोइंग ऑन? आई होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल दिवाली ब्रेक सबने बहुत एंजॉय किया। तो बैक टू पढ़ाई, बैक टू प्रैक्टिस एंड बैक टू मस्ती, राइट? सो हाय ऑल, हेलो पूनम, हेलो अनीशा, हेलो वालुसा, हेलो भव्या, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद अनदर सेशन ऑफ puzzle box, and the topic is one of the most important, that is non-verbal reasoning, जिसको visual reasoning भी बोलते हैं। ओके जी, सत श्री अकाल लवप्रीत, हेलो थानोस, हेलो अमूल्या, हेलो साची, हेलो अंश, हेलो जॉन, हेलो अफसाना, हेलो रूपक, हेलो दिया, हेलो वीरा, हेलो भास्कर, हेलो लवप्रीत, हेलो अनीशा, चलिए, हेलो जॉन, फाइन। सो लेट्स मूव ऑन टू दी सेशन नाउ। आई होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल दिवाली। अच्छा ब्रेक मिल गया आपको, अच्छा आपके लिए एक फेस्टिवल आया जिसमें सबने बहुत एंजॉय किया, राइट? नए तरीके की दिवाली थी, राइट? सो लेट्स मूव बैक टू द एजेंडा, दैट इज द एजेंडा ऑफ learning. So I'm Ravjot Singh, master teacher for mathematics and mental ability, and I'm going to start with a wonderful topic, non-verbal reasoning. So moving ahead, what is non-verbal reasoning? पहले इसको समझ लेते हैं। कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में विजुअल रीजनिंग भी बोलते हैं। So आपके सामने है, non-verbal reasoning involves the ability to understand the diagrams or information or the pictorial information. तो आप इसको पिक्टोरियल रीजनिंग भी बोल सकते हैं, आप इसको विजुअल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट हाउ बेटर यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, द इमेज, or whatever it is given. Even the reverse puzzles are the part of this beautiful variety, that is non-verbal reasoning. All the best for Friday. अरे वाह, ध्रुव is saying all the best for Friday. Okay, yes, Menti quiz कल है बच्चे. Sorry, day after tomorrow. Friday we have got a Menti quiz. Tomorrow we have got NTSC Super Sprint. कल Super Sprint का सेशन है. And on Friday I'm going to conduct a Menti quiz, right? And इस बार का Menti quiz आपके लिए एक सरप्राइज लेके आएगा आप सभी बच्चों के लिए, राइट? फिलहाल के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग को आगे बढ़ाते हैं। सो मूविंग अहेड, चलिए, Vedantu Olympiad School, everyone knows that Vedantu Olympiad School helps you in preparation of NTSC, Olympiads, KVPY, JEE, NEET, राइट? और आप लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। ओलंपियाड्स के लिए बहुत सारे बैचेस शुरू हो रखे हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रखी हैं, और मैं उसके बारे में आपको बीच में बताऊंगा। बट अभी शुरुआत करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। नाउ व्हेन आई से नॉन वर्बल रीजनिंग, इट सिंपली मींस पिक्टोरियल, समथिंग पिक्टोरियल। और पिक्टोरियल या किसी फिगर का रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ a disk like this, right? तो what is the interpret? ये देख के आपको क्या समझ आ रहा है, क्या बनने वाला है? प्लीज शो योर गेसेस, मींस what all you can interpret. इससे क्या बनेगा? The diagram which I am completing or I am about to complete, what is your thought? कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? What all can be created from this? देखिए जरा लोग क्या क्या बोलते हैं। स्माइली, अरे वाह, वेरी गुड। Lens, absolutely right. Banana, oh very good. Moon, yes. Now you can see beautiful answers, right? बिल्कुल अच्छे से स्माइली बन सकता है, राइट? यहाँ पे तो ये आपका स्माइली बन जाएगा। और अगर आप इसी चीज को बनाना के फॉर्मेट पे लेके जाना चाहते हैं, राइट, तो ये एक बनाना भी बन जाएगा इसी सेम चीज से। और अगर आप इसको मून बोलना चाहते हैं तो दिस कैन बी अ मून ऑल्सो, अ सेम डायग्राम एंड द इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ विजुअल रीजनिंग, मींस हर बच्चा, हर बंदा इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, ताकि जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपका ब्रेन सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करके फिर सोचे कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ विजुअल रीजनिंग, तो इसमें पोजीशंस बहुत मैटर करती हैं। पोजीशन मींस, लेट्स सपोज यू हैव गॉट अ बॉक्स,
Now when I say there is a box has got, or a square has got 9 important positions. Which are those positions? देख लीजिए फटाफट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर इस बॉक्स में कोई एक एलिमेंट रखा जाए और वो मूव करे, समथिंग लाइक दिस. इफ आई ड्रॉ अ बॉक्स or 2 boxes and I say there is a circle over here and then I draw a circle over here, that means जो movement है वो कैसे हो रहा है? It is moving from 1, it is skipping one place and it is moving on to place number 3, right? That's why the positioning is very important. Similarly it is more about rotation also. Rotation भी matter करता है. Clockwise है या anti clockwise है? For example, जैसा अभी आपने देखा था, that is if there is a triangle and in diagrams I am showing something like this, then you can very well see that is जो triangle है उसका movement हो रहा है, but किस direction में हो रहा है? It is moving this way, it is moving this way, it is moving this way. So this direction is known as clockwise and this direction which is reverse of clock is known as anti-clockwise. I hope it is clear to all. तो clockwise anti-clockwise सभी को समझ आ गया, right? Okay, fine. Okay, am I audible and visible? आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ढंग से? Am I audible and visible? Okay, you are facing some audio issues. Okay. I will check. Wait. So now I hope I am properly audible. I am properly audible and visible. अब सबको सही से सुन रहा होगा. अरे वाह, ध्रुव को पहले से पता है that some surprise is coming up right on Friday, right, for Menti quiz. Fine, okay, चलिए, let's move on. So now we shall be practicing questions. Okay, and let's solve. When I say let's solve, that means we are moving on to practicing of questions. Okay, I am starting with the first question which is from NTSC Stage 1 कर्नाटका. तो हम विजुअल रीजनिंग का यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो NTSC Stage 1 में आ रखा है एंड इट इज फ्रॉम कर्नाटका. कर्नाटका के पेपर का क्वेश्चन है. बहुत बेसिक क्वेश्चन है शुरू करने के लिए, बट इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज है जो आपको चेक करनी है. You can see there is a triangle and you can see there is a hexagon made up of 6 such triangles. And then you can see a rectangle divided into small parts and he is inquiring, भाई आपको बताना है what will be next. Means अब analogous to this. If triangle is to this, then this is to dash. आपको बताना है. Sorry for that. We have to check this. Sorry. There is a question mark available. So I need not to draw anything, right? So you have to tell me question mark को कौन replace करेगा, कौन सा diagram replace करेगा, and it's a beautiful question, although an easier one, and I can see answer as 4. Okay, people are posting answer as 4. Fine. We will check. Any other answer? 2 is also there. Okay, 2, 4. Fine. Now please pay attention. As you can see that this hexagon is made up of 6 triangles. That means triangle is the building blocks of the hexagon. Triangles को जोड़ के hexagon बना है. That means if I am talking of this final diagram, तो ये final diagram बना है right angled triangle से. बहुत सारे right angled triangle जुड़े हैं जिनसे ये बना है, right? As you can see, which are 8 in number. So आपका पहला logic बिल्कुल सही है. That is 4th. But if I say the building block is not a triangle, it is a rectangle. For example, if I say this building block is available over here,
and is available over here, right? Then the answer will be a rectangle. That means this question can have two answers. This question can have two answers, and that is the beauty of this question. जब ये NTSC stage 1 में आया था तब भी इसके दो आंसर थे. So NTSC में क्या होता है, whenever they come out with the when the answer key comes out, they give you time कि अगर आपका कोई different answer है और different logic है तो आप उनको भेजें, and then they upgrade or update their answer key. So for this particular question there were two options which were valid as per the given options. तो अगर आप 2 बता रहे हैं तो भी सही है, अगर आप 4 बता रहे हैं तो भी you are absolutely correct. Okay, so answer is 2 or 4. It can be 4 or it can be 2. Right? चलिए, तो आपने बिल्कुल सही बताया. अब हम आगे बढ़ सकते हैं. Next question. Okay. Next question is again from NTSC stage 1, again from the same paper, Karnataka paper. But पिछले question से ये question बहुत आसान है. This question is very easy as compared to the previous one. You can see there is a star diagram. So this is star of a question, but a very easy question. You can see there is a star. One of the portion of the star has been shaded, and there is one dot which is moving. So you have to check that which is the missing diagram. जो question mark है उसकी जगह पे कौन सा diagram आएगा आपको बताना है. चार ऑप्शंस आपके पास हैं 1 2 3 4 and the question is really very easy, and I can see people are posting answer as 2 3 and I have okay, I can also see 1. People are more interested in 2 and 3. Very few are saying 1. We will explore. Fine. 4 को किसी ने नहीं चुना भाई. 4 दिख रहा था ना सभी को, देख लीजिए 4 भी एक बार एक ऑप्शन है. You can check that also, right? चलिए let's solve this question now. बहुत सारे आंसर्स आ गए. Now what is this question? As you can see now, the shading part, I am talking of this. This is clockwise movement of the shaded part. First one, second one, third one. Now it has to be on the bottom one. यहाँ पे होना चाहिए. That means this diagram is not allowed. That means this diagram is not allowed. Either we can have answer as 2 or we can have answer as 3. Now I will focus the dot, the movement of dot. How is that dot moving up? Now dot is moving in the anti-clockwise direction, in this direction, as you can see, skipping one block. From this, dot has skipped this and has moved on to this. It has skipped this and has moved on to this. Now it will skip this and will move on to this particular triangle. So which is that option? Obviously that option is option number 3. That option is option number 3. I repeat, only 2 elements were involved. One was triangle, the other was dot. Triangle का movement तो बहुत आसान था. You were focusing triangle and many were focusing dot, but you need to combine both, and your answer is that is 3, absolutely rightly given by many of you. So this is Karnataka NTSC stage 1 question, right? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं. So let's move on to the next one. So answer is 3. Moving on to the next question. Next question is again from the same paper. Now it is very much clear to you कि किसी भी एक NTSC stage 1 के पेपर में इस टॉपिक से आपको 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, right? This is the third question from the same NTSC stage 1 paper. Question says complete the given figure analogy. Again a similar thing. We have got 3 diagrams. We have to find out the 4th diagram. We have got options also. There are elements which are circle, which are square, which are arrows. So you need to focus those and you need to accordingly ping or check कि आंसर क्या बनेगा. And people are posting, Akshat is posting 3, Avasthi is posting 4, 2, अरे 2, 3, 4 सभी आंसर्स आ गए. तो भैया आप एक बार डायग्राम देख लीजिए आसानी से, ध्यान से. Well, this is the diagram. As you can see, we have got circle, the first diagram, and then there are 4 options. अपना favorite option आप जो आपको सही लग रहा है उसको choose कर लीजिए. Then I will start with the explanation part, right? चलिए, as answers are coming up, I would be moving on to the explanation part because variety of answer आ रहे हैं, तो it's better to discuss. Now, let's have a look at the elements. What are the elements involved? I can see there is a circle, and inside the circle there is a square. But in the second diagram, the square is placed outside, and inside there is a circle. That means the swapping of polygons or swapping of 2 diagrams is taking place. So if we have got a square and a hexagon, then in the next diagram it should be hexagon outside,
it should be hexagon outside and this square should move inside the hexagon, which I can see is available in all options except this one. So it can be second, third or fourth, right? तो आप बड़े आराम से इसके अंदर स्क्वायर बना सकते हैं. But the question is, what about arrows? What is the pattern of arrows? So have a look. We were having one arrow, then the arrow got changed to 2 and it got, or it moved by, it is having an orientation of 90-degree rotation, or it is getting rotated by 90 degree, right? And that also in which direction? From this particular direction, it is moving to this direction. That is moving in the anti-clockwise direction. So if you have got arrows and then you need to move them to the anti-clockwise direction, it will be from 2 arrows, it will be 3 arrows and they all would be pointing upwards. है कोई ऐसा diagram? बिल्कुल है. We have got 3 as the answer. So 2 things again were to be noticed. The first is the swapping of the elements, outer becoming the inner and inner becoming the outer, and then the arrows which were increasing in number and they were rotating also. They were rotating in which manner? In the anti-clockwise direction. I hope that is clear to all. और 3 बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया था, right? चलिए. Well, 4 is not the answer because of the orientation of arrows, because of the orientation of the arrows, right? चलिए. So let's move to the next one. So answer is 3 as already discussed. 4th question पे चलते हैं. Now this is a question of NTSC stage 1 from Punjab. ये पंजाब के पेपर का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन and it is given in almost all mental ability books. The question says find the odd one out. There are 4 diagrams. You have to select one diagram which is not similar to the others. Now when we say odd one out, the category is very much, category should be clear to all that there should be a property which is being followed by 3 and is missing in 4th. एक प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो 3 में हो, चौथी में मिस करे. Okay, Harshad, you can post your logic, बच्चे, you can post your logic for the previous question. आपका जो भी logic बनता है, no issues with that. A question can have multiple logics, a question can have multiple answers also. तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका लॉजिक सही है और उससे आपका एक ऑप्शन बनता है तो मोस्ट वेलकम. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एनटीएससी में बहुत बार ऐसा हुआ है. अ क्वेश्चन कैन हैव 2 आंसर्स बिकॉज ऑफ 2 डिफरेंट लॉजिक्स, राइट? फिलहाल के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें एबीसीडी 4 डायग्राम बने हैं एंड यू हैव टू चूज वन व्हिच इज नॉट सिमिलर टू द अदर्स एंड आई कैन सी आंसर्स एज ए बी सी. अरे बाप रे, फिर से मिक्सिंग ऑफ आंसर्स हो गया. ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, राइट? एंड चलो डी भी आ गया. सभी के साथ जस्टिस कर दिया आपने, पर अभी इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा. सो व्हाट इज द आंसर एंड हाउ वी नीड टू प्रोसीड? एज यू कैन सी देयर इज अ यू शेप डायग्राम and it is covered by a semicircle. There is a U-shaped diagram and its opening is covered by a U-shaped diagram. There is a U-shaped diagram and it is covered by a semicircle, right? It is same in all 3 diagrams except this, where you can see a U-shaped diagram, but it is covered by inverted C. Inverted C. So this is a wrong diagram. This is a wrong diagram. I repeat once again, if you see the orientation of this particular thing, it is covered by a semicircle. Whereas in the first option, if you see, it is covered by inverted semicircle. So the answer has to be A. So the odd one out is A. आप किसी भी और ऑप्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड जो भी प्रॉपर्टी आप चूज कर रहे हैं दैट शुड बी विजिबल इन 3 एंड शुड बी मिसिंग इन 1. आई रिपीट, ऑड वन आउट इज अ फिगर which is missing out one property which is being followed by rest 3. There can be n number of properties, but we are looking for one thing which is missing in something and is present in all. बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं? They look for something which is exclusive to one diagram, means which is present in one diagram and is missing in 3. ये गलत है. It should be present in 3 and should be missing in the 4th one. Then only you will be applying the logic of odd one out. I hope that is clear to most of you. अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.
So the answer is A to this NTSC Stage 1 Punjab question. Moving on to the next one. Again, a question from NTSC Stage 1 Punjab. Which three figures will be forming a square? किन तीन डायग्राम्स को जोड़ के स्क्वायर बनेगा, ये आपको बताना है. ऑप्शंस बता रखे हैं, राइट? Okay, fine. I'm giving you time to see. Okay, I'm giving you time to see the question. आप आराम से देखिए क्वेश्चन को. आपको बताना है किन तीन डायग्राम्स को जोड़ के स्क्वायर बन सकता है, राइट? Options are ABC, BCD, CDE, BCE. This is again NTSC Stage 1 question from पंजाब. ये पंजाब का NTSC Stage 1 का क्वेश्चन है, राइट? तो ये भी एक वैरायटी है जहां पे एलिमेंट्स दिए होते हैं एंड यू नीड टू कनेक्ट देम. Obviously you are not allowed to connect them with some paper or so, but you have to visualize them in your brain कि कौन से तीन एलिमेंट्स है जिनको जोड़ के स्क्वायर बनेगा. And I can see people are posting answer as B, people are posting answer as D, people are posting answer as A. Now that's why these questions are tricky, because हर बच्चे को अगर आंसर डिफरेंट लगेगा तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, and that's why it is important कि आप इसको प्रैक्टिस करें. But as I have already shared, there is a possibility that a question can have multiple answers with multiple logics. अगर ऐसा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, but you should be sure कि आपका लॉजिक सही हो और आपके लॉजिक से ऑप्शन बनता हो. फिलहाल के लिए we have got 4 diagrams. Now if you see, the most peculiar diagram is A. The most peculiar diagram is A. A एक ऐसा शेप है जो किसी और शेप में फिट नहीं हो सकता, किसी को हेल्प नहीं करेगा. तो there is a very less probability कि A से कुछ बने. A से कुछ बने इसका बहुत कम probability है. B and if I say C, they are quite similar. They are quite similar, like two similar blocks, right? And there is a perfect figure that is E. तो अब हम जरा थोड़ा सा फिटमेंट करके देखते हैं B, C और E का. देखिए जरा क्या बनता है. If I pick this B and if I pick this C and if I pick this E and you fit these three blocks they will be forming a square. I repeat once again, if you will pick B, C को उल्टा कर दीजिए, E को उल्टा कर दीजिए और रोटेट कर दीजिए and then fix B, C and E, there will be a square. So the answer to the question is, that is D option. The answer to the question is D option. I repeat once again, if you will take this particular, I will explain this again. This is the diagram. You pick the other one and then you pick the trapezium and then you fix 3. You will be having a square, right? चलिए फिलहाल के लिए नेक्स्ट पे चलते हैं. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया और समझ आ गया तो भाई थोड़े से स्माइली थम्स अप शो कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया. ओके वेल बी सी डी बच्चे नहीं बन सकता, बिकॉज इफ यू सी डी के अंदर जो ट्रायंगल दे रखा है वो ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आप इसमें फिट नहीं कर पाएंगे. आप करके देखिए. इनफैक्ट यू कैन draw these diagrams and you can cut with a scissor and then you can check yourself also. But पेपर में ये सब नहीं अलाउड होता, तो पेपर में बड़े ध्यान से आपको ऑप्शन दर ऑप्शन चेक करना होता है by fitting in your brain, right? चलिए let's move on to the next one. Okay, we have got a puzzle. चलिए हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो एक पजल सॉल्व करते हैं और फिर दोबारा बैक टू क्वेश्चंस आ जाएंगे. पजल बड़ा मजेदार है, विजुअल पजल है. आपके सामने 2 केटल्स पड़ी हैं and he says if the smaller kettle can hold 2 liters of water, then approximately how much water in liters can bigger kettle hold? अगर छोटी वाली केतली 2 लीटर पानी होल्ड कर सकती है तो बड़ी वाली केतली अप्रोक्सीमेटली कितना पानी होल्ड कर सकती है, ये आपको बताना है. आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 8. I repeat once again, there are 2 kettles. He says the smaller one can hold 2 liters of water. So how much water can be placed or can be carried through the bigger kettle? That is, जो बड़ी वाली केटल है वो कितना पानी अप्रोक्सीमेटली कैरी कर सकती है, ये आपको बताना है. ऑप्शंस आर 2, 4, 6 and 8. 2, 4, 6 and 8. ओके, पीपल आर पोस्टिंग आंसर एज 2. 4 लीटर लग रहा है उनको आंसर. समर सिंह आंसर इज ऑप्शन 1, उनको 2 लीटर लग रहा है. ओके
ये मजेदार क्वेश्चन है और ये विजुअल सेंस के ऊपर जाता है और काफी बच्चे इसमें चकमा खा गए हैं, एज आई कैन सी देयर आंसर्स। तो देखिए बच्चे, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन? ही सेज दिस केटल कैन होल्ड 2 liters of water. Now this is a kettle, right? And if you see the another kettle, their beaks are at the same level. अगर आपने इससे ज्यादा इसमें पानी डाला तो वो यहां से बाहर आ जाएगा. That means the capacity of the bigger kettle is same as that of the smaller kettle. I repeat, the level of beaks of both the kettles is same. तो अगर छोटी केटल में 2 लीटर आता है तो बड़ी में भी 2 लीटर आएगा, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा पानी उसमें फिल करेंगे तो पानी का लेवल इस लेवल से ऊपर जाते ही पानी केटल से बाहर आ जाएगा. That means the maximum capacity of water that the bigger kettle can hold is only 2 liters or is same as that of the smaller kettle. आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि उनके बीक्स जहां से पानी बाहर आता है उनका लेवल क्या है, क्योंकि पानी हमेशा लेवल फॉलो करता है, सेम लेवल पे रहता है. तो अगर बीक का लेवल, केटल की बीक जहां से पानी बाहर आ रहा है वो लेवल सेम है तो दोनों की कैपेसिटी फिर सेम रहेगी. राइट? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आई होप सबको ये क्लियर हो गया अच्छे से. सो द आंसर इज 2 liters for this question. Let's move on to the next one. Back to the non-verbal reasoning questions. Choose the correct answer from the given alternative. Again a question which has got options and मैं आपको गारंटी देता हूं आपको एक से ज्यादा आंसर लगेंगे और हैं भी. For this question we have got multiple answers with multiple logics, right? तो आपके सामने एक पैटर्न चल रहा है and you have to identify that which is the next diagram. Which is the next diagram? That is the question. Okay, so people are saying 3, people are saying 3. As I've already stated, with multiple logics you will be landing up on multiple answers, right? कोई problem नहीं है, multiple answers हो सकते हैं question के. तो let's solve this question and let's see क्या क्या answer बनता है. Now, if you see we have got a rectangle and in that rectangle one line is getting added. Now to the diagram we are adding 2 lines. Which 2 lines? So obviously if you have added 1 line, then 2 lines, you would be adding 3 lines. If you would be adding 3 lines, then the final diagram needs to be something like this. 3 lines. So I can click this option. I can tick this particular option, but I can use a different logic also. I can use a different logic also. I can say that to the rectangle we have added 1 line. In the next diagram we have just completed the rectangle. Again we shall be adding 1 line, that is in this manner. In that case you would be taking answer as 3. So that means answer number 1 and 3 both are okay with 2 different logics. I repeat, if you will follow the logic of addition of number of lines, you are adding 1 line, you are adding 2 lines, so you would be adding 3 lines, you would be getting a diagram like this. But if you will follow a reason or a logic that to a rectangle we are adding 1 line, then rectangle gets completed. Now we need to add 1 more line, so that means the diagram will look like something like 3. So I hope that is clear to all. तो अगर आपने 3 बताया तो भी सही, अगर आपने 1 बताया तो भी सही, और अगर आप कोई और आंसर बताना चाहते हैं किसी और लॉजिक के साथ तो मोस्ट वेलकम, पोस्ट कीजिए, मजा आ जाएगा. फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं. आपको समझ आया तो प्लीज थोड़े से स्माइली थम्स अप बना दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको क्लियर हो गया. वेल भास्कर, एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, एनटीएससी स्टेज 1 या 2 में अगर कोई क्वेश्चन आता है और वो उसका एक ही आंसर देते हैं और आपका लॉजिक सही है तो यू कैन ऑलवेज चैलेंज दैट आंसर की by sending your answer with the logic and then they come up with the new answer key in which they incorporate your answer. They will be incorporating your answer अगर आपका आंसर और लॉजिक सही होगा, और ये हर साल होता है, बहुत सारे स्टेट्स में होता है. राइट? फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं.
So answer is 1 or 3. Moving on to the next question. Yes. Now this is very interesting variety of non-verbal reasoning, जिसको हम dot situation या dot diagram बोलते हैं, right? You can see there is one diagram. I hope that is visible. This diagram comprises of a circle, a triangle, and a square, and there are two dots. Now he says you have to pick a diagram which satisfies the same condition of the placement of the dots as in the figure. आपको similar diagram उठाना है जो ये dot situation को verify कर पाए. Now this is a fantastic question, but आपको सिर्फ dots को focus करना है. देखिए कैसे. You can see there is one dot which is common to triangle and square. There is another dot which is common to circle and triangle. That means I need to have a diagram. Which should have this sort of situation. So let's move one by one. If I go for the first diagram, have I got any space where I can put a dot for triangle and circle area? Of course, that is there. I can put my dot over here, which means triangle and circle. Do I have any space where I can look for triangle and square? Yes, of course, I have got one space where I can put a dot for triangle and square. So first diagram to bilkul sahi ja raha hai. Let's explore the second option. In the second option, if I have to look for a place jahan pe main dot place karu for circle and triangle. For circle and triangle, yes, I can place. So that is possible, right? Now if I say I am looking for triangle and square, for triangle and square there is only one common area, but if I will place over here, it will be common to all three. That means this is wrong diagram. That also implies कि ये variety आपको option से solve करनी है. अगली option देखिए, option number 3. I am looking for triangle and circle. Of course I can place a dot. Then I am looking for triangle and square. I have got this area common. If I will place over here, it will be common to all three: square, circle, and triangle. So ये गलत हो गया. So this diagram is also wrong. Let's move on to diagram number 4. I am looking for circle and triangle. Yes, I have got one region where I can place a dot. This dot is common to circle and triangle. But for the second dot, I am looking for an area common to triangle and square. The moment I will pick this particular area, it is common to all three. I am not looking for all three. That means this diagram is also wrong. That means answer to the question is option number 1. So for this variety, you need to verify the options. You need to check whether you are in position to place the dots similar to the given diagram or not. I hope सबको clear हो गया होगा ये अच्छे से. चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस वैरायटी का. So the answer is 1 to this particular question. Let's move on to another question of similar variety. Yeah, we are on the second question of the similar variety. इसके लिए आंसर कीजिए फटाफट. You have got one diagram, you have got 4 options. शिवम, as far as the lectures are concerned, बच्चे कल आपका 1:30 सेशन है NTSC सुपर सीरीज का. And as far as the Friday is concerned, again 1:30 we are having a Menti quiz. And Menti quiz will be a surprise for most of you, right? But अभी के लिए हम ये solve कर रहे हैं, which is non-verbal reasoning, right? NTSC super series is going on and awesome topics are getting covered through that. फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. Okay, people are posting answer as 2. Okay. अरे वाह प्रिंस, good to know that. चलिए, people are posting the answer, so let's explore this now. My first dot only in square. The second dot common to circle and triangle. The third dot common to triangle and square.
So that means I need to verify the options that in which particular option I can find these three regions or I can place these three dots. So let's start from the first one. First one, I am looking for a region common to that is circle and triangle. Circle and triangle, of course I can place my dot. Then I am looking for only in square. Well, only in square is not possible. Only in square is not possible. Square has got something common with circle or triangle. So this diagram is wrong. So this diagram is wrong. Let's move on to the second diagram. I am looking for common to circle and triangle. Circle and triangle. Yes, I have got a region, but the moment I will place a dot, it will be common to square also. So I'm not looking for that. I was looking for only circle and triangle, but this is circle, triangle and square. So this is wrong. Moving on to the third diagram. Circle and triangle. Circle and triangle, have I got a region? Yes, I have got a region. I can place my dot. Then I am looking for only in square. Can I place a dot only in square? Yes, I can place a dot only in square. Can I place a dot common to triangle and square? Triangle and square. Triangle and square के बीच में क्या मैं कहीं पे कोई dot place कर सकता हूं जहां पे circle ना आए? Yes, I can place that. This is a small region. Let's explore option number 4. Fourth को देखते हैं. First one, common to circle and triangle. Common to circle and triangle, I will place over here, which is wrong because this is common to square also. That means only diagram, the only diagram in which I can place all three dots is diagram number 3. So third diagram is the right answer क्योंकि उसमें आप तीनों dot place कर सकते हैं, right? चलिए, I hope ये clear है और अगर clear है तो फटाफट yes, answer is option number 3. I repeat once again, your criteria is you have to check dots कि कौन सा dot कहां पे है. This is only square. This is circle and triangle and this is triangle and square. आपको सिर्फ एक चीज ट्राई करनी है, आपको ये तीनों डॉट्स डायग्राम्स में प्लेस करके देखने हैं कि किस डायग्राम में ये तीनों डॉट रखे जा सकते हैं. एंड यू आर डन, राइट? ओके, वेल शिवम, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग इन कंसर्न टू एनटीएससी, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बच्चे चैनल पे पढ़े हैं जहां पे एनटीएससी के बारे में बहुत मैंने बता रखा है, बाकी टीचर्स ने भी बता रखा है. डू गो थ्रू दोस, राइट? फिलहाल के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड आई होप we are moving on to the previous session's puzzle. No, we have got, okay, we are heading on to the last question for practicing and after that we shall be looking at the winners or the names of all those जिन्होंने last week के puzzle का सही आंसर दिया था puzzle box में, right? Last week puzzle box में rebus puzzles cover हुआ था और rebus puzzle में एक puzzle पूछा गया था जिसका आंसर आपको पोस्ट करना था. puzzle box के हर सेशन में एंड में एक पजल पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना होता है और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में उन बच्चों के नाम पोस्ट किए जाते हैं जिन्होंने टाइमली फर्स्ट 2 डेज के अंदर सही आंसर पोस्ट कर दिया हो. तो फिलहाल चलते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के ऊपर, which is again from visual reasoning. You can see there are 2 diagrams, lot many elements are there, there is a problem figure, there is an answer figure. You have to pick 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 में से सही आंसर कौन सा है आपको ये बताना है, राइट? और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो ध्यान से चलाइए क्वेश्चन को थोड़ा सा, राइट? देखिए कि आप क्या आंसर देते हैं एंड आई कैन हेल्प यू इन दिस. ओके, आई विल हेल्प यू इन दिस. Look, there are lot many elements which are given in this question and you need to check that how they are moving. For example, if you see the movement of this matchstick, it is moving from one corner to the other. It is moving from one corner to the other. Now it should be placed at this place. Well, that is the case in all diagrams. That is true for all diagrams. So I will focus another one. I will focus the next one, that is this X. That is, it is moving from this to this, to this corner, to this corner, to this corner. Now it should be placed over here. That means this is the wrong answer. This is the wrong answer. So my answer should be from first, second, third and fourth. So 2 elements are done. Now I am looking for rest 2. Rest 2. Let's see how they are moving. So I can see the positioning or the movement of S. S is over here. It is going to this place crosswards, getting replaced by C. C moving crosswards, getting replaced by arrow. Now arrow needs to move crosswards. That means arrow should be placed over here. That means this is possible, this is not possible, this is not possible, and this is possible. That means
Now I have got only two options. Either my answer is first or my answer is fourth. So now I will focus the last element. The last element is equals to. Equals to gets replaced by O. O moves crossways. O gets replaced by hash. Hash moves crossways. Now hash needs to be replaced by new element. By new element. New element. Hash needs to be replaced by new element. So out of 1 and 4, new element is rectangle because equals to पहले आ रखा है. Equals to is not a new element, it is already there. That means the new element is rectangle. So my answer will be, that is option number 1. थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है as compared to the previous ones, but I hope अगर आपको नहीं क्लिक किया तो आप दोबारा से रिकॉर्डिंग देखेंगे स्लो तो आपको समझ आ जाएगा. So the answer to the question is option number 1. In this particular question, I have checked the movement of all 4 elements. All 4 elements. Yes, this is purely for NTSC. This is purely for NTSC. For all those who are targeting NTSC, they should be well versed with non-verbal reasoning. और आज मैंने आपको I guess 5 questions NTSC के पुराने करवाए हैं in concern to non-verbal reasoning. तो अभी फिलहाल के लिए आगे चलते हैं पिछले हफ्ते के पजल पे. Right? So the answer is option number 1. Yes. So last week in the puzzle box we had covered rebus puzzles. Rebus puzzles are again visual puzzles, but आपको visually decode करना होता है. तो last week आपसे ये puzzle पूछा गया था, in which you were in position to see that someone is paying. कोई पैसे पे कर रहा है, पर किसको पे कर रहा है? टेंट को. और आपसे बोला गया था इनको कनेक्ट कीजिए. तो क्या बनेगा? This is a term connected with inventions. ये जो टर्म बनेगी वो इन्वेंशंस के साथ जुड़ी हुई है. तो इन्वेंशंस के साथ कौन सी टर्म जुड़ी है जो टेंट और पेमेंट से बनती है? दैट इज पेटेंट. सो द आंसर टू द क्वेश्चन वाज पेटेंट बिकॉज सो द आंसर वाज पेटेंट. द आंसर वाज पेटेंट. यहां पे पेमेंट हो रहा है और टेंट को हो रहा है, सो इट इज पेटेंट. राइट. अब देखते हैं किन बच्चों ने लास्ट वीक के पजल के सही आंसर पोस्ट किए थे कमेंट बॉक्स में लास्ट लेक्चर में. लास्ट नॉट नाउ, अभी भी बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोस्त जिन्होंने लास्ट वीक के पजल के सही आंसर दिए थे. सो राइट आंसर्स वर गिवन बाय मेनी स्टूडेंट्स एंड देयर नेम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. तेजस गर्ग, युतीक्षा, ममता सैनी, श्रीनिधि, अक्षिता, धैर्य, यशवी, वर्धा जागती, श्री वैष्णवी, विश्वजीत, दिव्यश्री, अर्नव गर्ग, हर्ष पलानी, आयशा, निथारा, भरत गुप्ता, अभिदीप, वृंदा ठाकुर, विश्वजीत सिंह, श्रेया, स्वातिक एंड मैनी मोर. वाई एम सेइंग मैनी मोर? हो सकता है आपने जब आंसर पोस्ट किया हो उससे पहले सभी बच्चों के नेम्स पिक कर लिए गए हो, बट यू शुड ट्राई टुडे. आज का पजल आपके सामने आने वाला है. इफ यू फील यू कैन सॉल्व दैट पजल, डू पोस्ट द आंसर टू दैट पजल विद योर नेम एंड योर क्लास. राइट. सो हियर इज द पजल फॉर टुडे. आज के लिए पजल आपके सामने है, विच इज अ पजल फ्रॉम विजुअल रीजनिंग, अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक. आप इस वीडियो को पॉज करके बाद में ये कॉपी कर सकते हैं या अभी भी स्नैपशॉट ले सकते हैं. मैं 1 सेकंड के लिए फ्रेम से बाहर जा रहा हूं ताकि आप स्नैपशॉट ले पाए. सो दिस इज द पजल इन फ्रंट ऑफ यू. राइट. यू कैन टेक अ स्नैपशॉट एंड यू हैव टू पोस्ट द आंसर विद द लॉजिक, विद योर नेम एंड योर क्लास. जितना जल्दी पोस्ट करेंगे उतना बेहतर है. सो फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू द एंड ऑफ दिस सेशन. And for all those who are preparing for NTSC, I am repeating again, we are already running a crash course and a test series. अगर आपको crash course या test series में से कुछ भी ज्वाइन करना है या प्रैक्टिस करना है, so this is the information which is available. You can use these coupon codes to get both the things on a damn cheap rate, right? So also अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हैं, भाई वेदांतु ओलंपियाड स्कूल आपको क्या क्या बता रहा है, तो आप ये टेलीग्राम के ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं. t.me Vedantu MAC. This is for mental ability. I repeat, t.me/Vedantu MAC MAC. That is mental ability class. अगर आप चाहें तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं और इस ग्रुप पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि मेंटल एबिलिटी का सेशन कब आ रहा है. राइट. तो फिलहाल के लिए आई एंड ओवर हियर ओनली. सम पीपल आर आस्किंग स्टेज 1 और स्टेज 2. दिस इज फॉर स्टेज 1. राइट. एनटीएससी में रिवर्स पजल्स नहीं आते बच्चे. रिवर्स पजल्स आर देयर टू जगल और टू चर्न योर ब्रेन, ताकि आपके सोचने की एबिलिटी बढ़े और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए. राइट. वेयर टू पोस्ट आंसर? अक्षत, अभी जब ये लेक्चर खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स पोस्ट करने हैं. राइट.
एनटीएससी इन दिल्ली, बच्चे एनटीएससी इन दिल्ली में पहले भी बता चुका हूं, दिल्ली के मेंटल एबिलिटी के पेपर में बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, right? So if there are 100 questions, then out of those 100 questions, you would be getting at least 20 questions from core mathematics, right? In mental ability only, right? Other than 20 maths question in your SAT part, you would be facing more than 20 questions in mental ability from maths. I'm talking of NTSC Stage 1 Daily paper, right? मैं आपको और भी बताऊंगा कल के सेशन में, कल सुपर सीरीज का सेशन है एनटीएससी का, एंड आई एम गोइंग टू कवर 10 क्वेश्चंस विद शॉर्टकट्स। तो मैं कल आपको 10 एनटीएससी के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और उनमें आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा। और आज भी आप चाहें तो दोबारा मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं। एट 7 o'clock आई एम कंडक्टिंग अ मास्टर क्लास, अ वेबिनार फॉर एनटीएससी, एंड आई एम कवरिंग 10 क्वेश्चंस ओवर देयर आल्सो, राइट? तो फिलहाल के लिए बाय फॉर नाउ, टेक केयर। I hope you all must have enjoyed the class, right? If you have any query, you can always email us at volt20.vedantu@gmail.com. तब तक के लिए बने रहिए, keep on learning at Vedantu. So stay at home, stay safe, be a winner. Stay at home, stay safe, and rock the world. Thank you very much. Goodbye for now. Take care. You can post